morning assembly with college shower. I request all of you to please stand straight, join your hands, cover your head and close your eyes. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Now I would like to call Navdeep Kaur from class B.Ed second year. Please come forward and share with the thought of the day. Good morning to all of you. Today's thought is, don't close the book when bad things happen in your life. Just turn the page and begin a new chapter. Thank you. Now I share some campaign launched by Draupadi Murmu. It's campaign about catch the rain. Catch the rain means water conservation. Water conservation in today's life is very necessary because आजकल जो पानी के ऊपर चर्चा चल रही है कि पानी नू बचाओ, पानी नू घट यूज करो। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग करके साडा पानी का लैवल है, ग्राउंड वाटर लैवल है, वो बहुत ज्यादा घट रहा है। तो इस करके द्रौपदी मुर्मू ने इस बार एक कैंपेन लॉन्च किया है कैच द रेन, और इनकी थीम है जय शक्ति से जय नारी शक्ति, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट भी उन्होंने शो करना सीगा। तो इस करके इन्होंने दो थीम्स रखे है, एक जय शक्ति से नारी शक्ति एंड सेकंड इज सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। एंड सेकंड न्यूज इज सानिया मिर्जा अबाउट स्पोर्ट्स। सानिया मिर्जा अपना करियर अब एंड कर रहे हैं, तो इन्होंने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे एंड है इनका हैदराबाद में। तो इन्होंने अपनी लाइफ भी वहां से स्टार्ट की थी, अपना बैडमिंटन करियर भी वहीं से स्टार्ट किया, तो नाउ उन्होंने हैदराबाद में ही इसको एंड किया। एंड थर्ड न्यूज रिलेटेड टू हीट टॉलरेंस। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट इतनी ज्यादा हो गई है कि फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स के लिए
हीट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने फार्मर्स के लिए ये बोला है कि अगर वो न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके फार्मर्स अगर क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे तो हीट बैलेंस हो जाएगी। तो इसलिए हीट बैलेंस करने के लिए उनको न्यू टेक्नोलॉजी ही अपनानी पड़ेगी। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। इस टॉपिक पे वुमेन्स डे पे स्पीच बोलने के लिए नाउ आई वुड इनवाइटेड सिमरनदीप कौर फ्रॉम बीएड फर्स्ट ईयर। शी गेव स्पीच ऑन द वुमेन्स डे। A very warm good morning to our respected principal sir, teachers and my dear friends. Myself Simranpreet Kaur from B.Ed 2nd Sem. On this auspicious occasion, I am incredibly delighted to deliver a short but motivational speech on Women's Day. March 8th is observed as an International Women's Day to honor the achievements of women in various fields. Nowadays, women are equally productive as men in many spheres of life. It's the day celebrated to women's achievements in various social, political and cultural fields. The history of why Women's Day is celebrated goes back to 109 years. In 1909, when a socio-political party of America celebrated 15,000 women who protested against various issues like low pay scale, equal opportunities, and lack of voting rights in New York City. In 1975, the United Nations recognized International Women's Day, and from 1996, International Women's Day celebrated in our society. It is also important to raise awareness about women's rights and gender parity. For ages, men have had more privileges in every aspect of life in a society, which could be pay scale, social status, or voting percentages. We are living in 21st century and the world is slowly moving towards gender balance. We cannot dispute that the women approach all they do, whether at home or in business, with great zeal and skill. They create not only themselves, but the entire community. Every day ought to be recognized as a day in which we celebrate the divinity of women. The day of empowering women is enormous and gender equality demands it. In addition, a culture that values women equally and does not take them for granted is a better society. Women used to be confined to their houses and prohibited from leaving the place to work. Today, women have equal employment opportunities and are permitted to compete with males. Today's women realize they have the skills and potential to leave the house and contribute positively to their community. Women's participation strengthens peace agreements, strengthens society, strengthens economies. Women in the current day no longer rely on men. She is capable of accomplishing everything like men and is independent and self-assured. Women are the backbone of any developing society, whether we accept or not. Women play a major role in many places of the world. Let's all honor and respect and adore all the amazing women in our lives on this International Women's Day, whether they are your mother, your wife or daughter. Let's demonstrate our pride in their achievements and commitments of building a world free of all ills for women. Thank you. Thank you, Simrandeep Kaur. Now I would request Juhi Yadav, Ahmed 4th Sem. Please come and give speech on Women's Day. Women are the real architect of the society. An adequate morning, respected principal sir and teachers and my dear friends. Today I, Juhi Yadav, is celebrated to International Women's Day. Women's Day is celebrated around the world every year to embed an idea of the importance of women.
On International Women's Day, various seminars and programs are arranged to signify the importance of women. Speeches from a major part of Women's Day, events women really major part of Women's Day. To build a society, they build to not only themselves but the whole community, yet history has failed women many a time. To represent what a woman can be, there cannot be just a day to celebrate women. Every day should be a day where we respect the dignity of women around the world to celebrate the achievements of women in social, political and economic and other fields of life. Today women rule almost every field of life, work at par with men. We cannot deny that we eat at home or work, each one of it in their own way. International Women's Day was observed for the first time since 1911. Since then, every year on the 8th of March, womanhood is celebrated around the world. The honor all the astounding women in our lives and all the extraordinary women history has witnessed. This day is particularly observed to acknowledge the achievements of women in various aspects of life. Now, many of mine sitting here might have a question. Why do we need to celebrate Women's Day? Might not be a good answer, but from my side there's a good need to celebrate a Women's Day. Because women are often subjected to what they cannot. They face biased behavior of people, and statistics show that education ability for women is still lower than for men. It was only after World War II that International Women's Day was recognized to be celebrated officially. The date was chosen to be on the 8th of March. 8th of March as the day tribute to the Great Women's Revolution in Russia. Took place on 23rd Feb 1917 March as per the European calendar. So the date chosen, United Nations acknowledged Women's Day officially in 1977, 2 years after the declaration of the International Year of the Women. The General Assembly legally adopted the resolution claiming a UN Day for women's rights and international peace. So this International Day lets us all show appreciation, respect and love to all the incredible women our lives to be your daughter, mother, wife. Offers and place to create a world where women do not have to face any affliction. Now I would like to end up my speech with getting good thoughts from you all about women. Thank you. Now I would request Navdeep Kaur, B.Ed second year, to say poem on Women's Day. Good morning to all of you. मैं औरत दी की सिफत करा, इंसान खुद औरत दा जाया है। मैं अपनी मां दे रूप विचों हर वार ही रब नूं पाया है। एक औरत मेरी दादी मां, जिस करके मेरे बाप दा मेरे सिर ते छाया है। मैं बैठ जिन्हां दे मोढे ते झूठा कुल जहान दा पाया है। एक औरत मेरी भैन वड्डी, जिस बचपन नाल लंघाया है। किसे गलती ते पैंदी मार वेले मैनू कई बार बचाया है। हर घर विच औरत हुंदी, औरत ही घर दा सरमाया है। फिर पता नहीं दुनिया ने क्यों धी नूं ही माड़ा बनाया है, थैंक यू। It is our great honor for our Punjab कि सतिंਦਰ सत्ती कैनेडियन ਦੀ बैरिस्टर बन चुकी है। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੂਮਨ
ਜੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੈਰਿਸਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. I would invited Harpal Kaur, B.Ed second year, so that she shares speech on importance on education. बेटे आई नहीं, हरपाल नहीं आई। So next, no smoking day, जो आजकल मीन स्मोकिंग ਦੀ ਜੋ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਡੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੋਕਰਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਇਟ ਕਰ ਦੇਣ ਸਮੋਕਿੰਗ। ਫਸਟ ਨੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਡੇ ਮਾਰਚ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਐਸ਼ ਵੈਡਨਸਡੇ। Ash का मतलब है second day of Wednesday. Each year the campaign is promoted with the theme in the form of short phrase. हर साल ये smoking day मनाया जाता है, but I think smoking day मनाया तो जा रहा है, but इन्हों कोई properly मतलब लागू नहीं कर पा रहे। हजे भी आजकल देखा जाए तो बहुत सारे केसेस इदा दे है जिंदे विच smoking day smoke सब तो ज्यादा यूज हो रही है। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ phrase यूज किया गया सीगा break free। ब्रेक फ्री का मतलब है स्मोक तो ब्रेक फ्री मिले। सेकेंड 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ टाइम टू क्विट कि ਹੁਣ टाइम आ गया कि स्मोक ਨੂੰ क्विट करो ਤੇ अपने फ्यूचर ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। This campaign is run by the charity of the Sama name based London with 4 full-time staff until it was merged with the British Heart Foundation in 2011। मेनली यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕ ਛੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਜਾਓ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵੈਡਨਸਡੇ ਦੇ 2 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਵੈਡਨਸਡੇ ਨੂੰ ਸਮੋਕ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਹੋਲੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ, तो देखा जाए तो होली भी उन्होंने एक आप थीम दे विच ले सकते हैं, क्योंकि वाइट कलर जो है अगर आप उन्होंने एज अ इंडिया ट्रीट करिए और बाकी जिन्ने भी कलर्स है वो साडे अलग अलग कल्चर शोज करते हैं, मतलब कि एक वाइट कलर साडा इंडिया और बाकी जिन्ने भी कलर्स है वो साडे कल्चर्स है। हर एक कल्चर इनू मनांदा है। अजकल होली हुण हर एक कल्चर चाहे मुस्लिम है चाहे सिख है चाहे जैन है, हर किसी की अपनी अपनी मिथ है, अपनी अपनी परंपरा है इनू मनाउण दी। अगर देखा जाए तो हिंदूज दे विच होली क्यों मनाई जाती है, क्योंकि अगर उन्होंने ट्रेडिशनल स्टोरीज है कि हरिण्य कश्यप के वध करके ते उन्हों दी सिस्टर होलिका दे करके ये होली मनाई जाती सी, क्योंकि वो अपने भतीजे नूं चक के अग दे विच बैठ गए सीगे, तो उन्होंने कोल एक देखा जाए एक चादर सीगी, अगर वो बैठ जाते अग दे विच तां फिर उन्होंने कोई मतलब अग जला नहीं सकती सी। इस करके उन्होंने चाहते थे कि प्रहलाद को मारना चाहते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेस्टिनी वो चादर उतर के प्रहलाद उपर बैठ गई थे, जिस करके होलिका दहन मनाया जाता है। अगर आप सिखा की गल की जाए तो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम से शुरू किया गया सीगा। महाराजा रणजीत सिंह ने अलग अलग टेंट्स बनाए सीगे, उन्होंने एज अ होली नेम नहीं दिता सी, उन्होंने कहा सीगा कि असी अलग अलग कलर्स इस करके शो कर रहे हैं ताकि हर एक कल्चर का बंदा साडे कोल आवे अगर उन्होंने हेल्प चाहिए है, तो इस करके उदों तो सिख विच भी होली मनाई जाती सी। अगर सैकेंड गल करिए तो अनंदपुर साहिब दे विच मेनली होला महल्ला मनाया जाता है। 3 दिन का इवेंट्स होंगे अनंदपुर साहिब दे विच, इहदे विच कीर्तन म्यूजिक पोइट्री हर एक चीज़ परफॉर्म की जाती है। होली उन्हों का जो होला महल्ला है वो एक तरह का ब्रेवरी नूं शो करता है कि उन्होंने ब्रेवरी किस तरह की है, उन्होंने किस तरह पंजाब दे विच जिन्ने भी युद्ध लड़े है उन्होंने ये शो करता है। गुरुद्वारे दे विच सारे इक्को ही पंगत विच बैठ के पंगत दे विच बैठ के लैक्टो वेजिटेरियन फूड खाते हैं जिन्होंने आप लंगर बोलते हैं। इवेंट कंक्लूड करता है होला मोहल्ला विद द लॉन्ग मिलिट्री स्टाइल प्रोसेशन नियर तख्त श्री केसगढ़ साहिब। Now I requested Gagandeep Kaur from B.Ed for second year to show some women's empowerment.
नहीं है कि नहीं है कितनी Good morning to one and all present here. Today I stand before you to present a PPT on Women Achievers of India. The theme for International Women's Day 2023 is Digital Innovation and Technology for Gender Equality. It recognizes and celebrates the women and girls across the world who are championing the advancement of transformative technology and digital education. The aim for International Women's Day is to celebrate women's accomplishments and to embrace gender equality. With this day, the day also aims to raise awareness about gender equality and promote equal participation in social, economic, cultural and political activities. From science to cricket pitch, literature to cinema, Indian women are everywhere. On the occasion of International Women's Day, we bring you a small rundown of those amazing women's achievements in India who were first in their field and their contribution towards making India proud. Number one is Avani Chaturvedi. Avani Chaturvedi is a squadron leader born on 27th October 1993. Is an Indian pilot from Rewa district, Madhya Pradesh. She was declared the first woman combat pilot along with the two of her cohorts, Mohana Singh and Bhavana Kant. The trio was inducted into the Indian Air Force Fighter Squadron in June 2016. They were formally commissioned by then Defence Minister Manohar on 18 June 2016 to serve the nation. Mithali Raj, also known as Lady Tendulkar of Indian women cricket, was born on 3 December 1982. Is an Indian cricketer and a former captain of Indian women national cricket team from 2004 to 2022. Mithali is the highest run scorer in women's international cricket and is the recipient of several national and international awards, including Wisden Leading Women Cricketers in World 2017, Arjuna Award in 2024, Padma Shri in 2015, Major Dhyan Chand Khel Ratna Award in 2021. Mary Kom. Mary Kom was born on 24th November 1982. Is an Indian amateur boxer, politician and former member of Parliament, Rajya Sabha. She is the only woman to win the World Amateur Boxing Championship 6 times, the only female boxer to have won a medal in each one of the first 7 World Championships. Sania Nehwal was born on 17th March 1990. Is an Indian professional badminton player, a former world #1. She has won 24 international titles. She represented India 3 times in Olympics, winning a bronze medal in her second appearance at London 2012. Geeta Gopinath is an Indian-American economist who has served as the first Deputy Managing Director of the International Monetary Fund since 21 January 2022. She had previously served as Chief Economist of IMF from 2019 and 2022. Hima Das was nicknamed as Ring Express, is an Indian sprinter from the state of Assam. She holds the current Indian national record in 400 meters with the timing of 50.19 seconds that she clocked at 2018 Asian Games held in Indonesia. Arunima Sinha is an Indian mountaineer and a sportswoman.
She is the world's first female amateur to scale Mount Everest, Mount Elbrus, and many mountains. She is also a seven-time Indian volleyball player. Usha Kiran, a youngest CRPS officer to be the part of Cobra, and she is currently serving the volatile region of Bastar in Chhattisgarh. Deepa Malik is an Indian athlete. She started her career at the age of 30. She is the first Indian woman to win a medal in Para-Olympic Games and won a silver medal at 2016 Summer Para-Olympics in shot put. She also won the gold in F53-54 javelin event held at Para-Athlete Grand Prix held in Dubai in 2018. Shanti Devi, she was the first truck mechanic in India who made India proud, and she has been working for more than 20 years now. India is blessed to have such female achievers who went across all the odds in different professions and accomplished it. Thank you. थैंक यू गगन। आया समय, उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खोदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर बनना है। अपने को कमजोर मत समझो, अपने को कमजोर मत समझना। जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो अपनी संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम आगत की। तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है, देश का अपने कर्मों से रचना है। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल वुमेन्स प्रेजेंट हियर। आई रिक्वेस्ट यू रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर टू गिव स्पीच ऑन सम वुमेन्स डे। Thank you, Ruby. A very good morning to all present here. Time to already scheduled to baat ja rahe, so I will be very brief. First of all, congratulations to all the students and teacher in charge of the mentor group for organizing this wonderful morning assembly and on very relevant theme, that is Women Day. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 8th March is an International Women Day। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਉਸ ਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਾਊਂਡ 115 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਲਸ ਸੀ, ਵੂਮਨ ਸੀ, ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਫਿਰ ਦੈਨ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਡੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਚਸ ਬਾਈ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਪੀਚਸ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਵੇ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਸ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਪੀਚ, ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੂਹੀ ਨੇ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਤੇ ਵੈਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਵੂਮਨ ਡੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਲਸ ਦਾ, ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਗਨ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾਮ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਵੂਮਨ ਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ, ਦੈਨ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ, ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਫਰੀडम फाइटर, ਦੈਨ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ। ਦੈਨ ਸੁਚੇਤਾ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਫਰੀडम फाइटर ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਲక్ష్ਮੀ ਸਹਿਗਲ, ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ, ਮੈਰੀ ਕੌਮ, ਕਿਰਨ ਵੇਦੀ, ਦੈਨ ਮੇਗਾ ਪਾਟਕਰ, ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੇਗਾ ਪਾਟਕਰ। ਦੈਨ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਰਾਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ, ਰਾਮ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮੀਲਾ। ਦੈਨ our honorable president ma'am Draupadi Murmu, then Ahila Bai Holkar,
अमृता शेरगिल, आशा भोसले, लता मंगेशकर, ये कुछ नाम ने जिन्हां नूं होर ज़्यादा पढ़न की लोड़ है, होर ज़्यादा देखण की लोड़ है. ट्राई टू रीड द लाइफ ऑफ दीज लेडीज, दीज वुमेन्स जिहड़ियां तुहाडे वास्ते एक वुमन एम्पावरमेंट का इंसिग्निया ने, तुहाडे वास्ते एक एग्जाम्पल ने. जिन्ना तुसीं इन्हां लेडीज़ बारे पढ़ोगे, अज तुहानूं बहुत सारे राइट दिते हुए ने, लेकिन जदों इन्हां लेडीज़ ने अपने आप को एस्टैबलिश किया, शायद उन्नियां फेवरेबल कंडीशंस नहीं सी. If we will read the biographies of the autobiographies or the biographies of these ladies, these women, we will get motivated. चाहे वो मेल ने चाहे फीमेल ने, जे तुसी पढ़ोगे तुसी इन्हां तो मोटिवेशन ले सकते हो. Then coming to the special theme of 2023, theme बच्चे ने किसी ने दस्या सी, Digit All Innovation and Technology for Equal Rights. ये थीम क्यों सिलेक्ट किया यूनाइटेड नेशन ने? यू मस्ट रीड इन डिटेल. आज भी सर्वे होंदे ने, ये सर्वे दस रहे ने कि बाय 2050 75% जॉब जड़ियां होणगियां दैट वुड बी ऑन द बेस्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. 75% जॉब्स दे विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होएगी. ते अज दी डेट दे विच ओनली 22% वुमेन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड स्टडीज, वर्क्स, प्रोजेक्ट्स. That is the basic reason for selecting this theme for the 2023 Digit All Innovation and Technology for Equal Rights. आज भी स्पेशली आफ्टर कोविड पैंडेमिक गर्ल्स ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਬਸਟੈਕਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰਲਸ ਲਈ. ਸੋ ਗਰਲਸ ਨੀਡ ਟੂ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਮੈਚ ਦਾ ਮੈਨਸ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਨਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਵੀ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ essence of the theme. क्यों 75% all over the world एक सर्वे होया सारियां फीमेल जर्नलिस्ट थे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 75% ਟਾਈਮਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨਸ ਨੀਡ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਵੂਮਨ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਘੱਟ ਹੈ 2050 ਤੱਕ 75% ਜੌਬ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੂਮਨ? ਓਨਲੀ 22%. ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਜੌਬ ਲੈਣੀ, ਜੌਬ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ.